अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में जो पहला हिस्सा है उसमें तो हमारा लेसन जो है बिल्डिंग अ डेंसिटी कॉलम उसको इख्तिताम पर लेके आएंगे एंड देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर इज बेसिकली गोइंग टू बी शेयरिंग विद यू एक्सटेंसिव फुटेज जो हमने फिर बच्चों के साथ उनकी रीडिंग असाइनमेंट्स डिस्कस की और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस किया। यानी ये जो हम जितनी एक्सप्लोरेशंस करते रहे हैं ऑन डेंसिटी उसको अब हम थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाह रहे थे कि बच्चे अब थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें और सोचें कि अच्छा डेंसिटी की रियल लाइफ में एप्लीकेशंस क्या होती हैं, द मेजर कॉन्सेप्ट्स दैट दे हैव बीन एक्सप्लोरिंग एंड इंडीड solving problems. So we will get to it after we are done with building a density column. So जो अब हम आपको पहली फुटेज दिखा रहे हैं उसमें बच्चे अब उन्होंने प्रेडिक्शन कॉलम तो आपको याद है पिछले लेक्चर में बना लिया था and now they are going to actually build their density column. So let's go to the classroom. ये आपकी ग्लिसरीन है। इसमें पहले आप डालिएगा you put the oil in first. You will put all the oil in first. 25 मिलीलीटर सारे के सारे डाल दें। हाँ, उसका और इंतजार नहीं करना, फटाफट डालें। ये नहीं कि आप बैठे रहो नहीं, वो डाल दो फौरन। और फिर जब वो 25 मिलीलीटर डालोगे तो इस सिलेंडर में कितनी वॉल्यूम हो जाएगी? 15। उसके बाद हमने सिर्फ 25 मिलीलीटर पानी डालना है, तो फिर सिलेंडर पे कितनी लेवल होनी चाहिए? 75। So in that order, in the cylinder which you do not move, which contains glycerine, first pour in all the vegetable oil and then pour in 25 milliliters यानी कि 75 ml मार्क आ जाए पानी and don't wait. जल्दी सब कुछ करो and then watch what is happening. Then just watch. But जल्दी. मैम we have to utilize this one. जी बिल्कुल। ये इसमें जल्दी से ये डालो और फिर 25 मिलीलीटर ये डालो। टाइम नहीं लगाना, फटाफट करो। जब ये 25 ml मार्क तक जाएगा ना, चलो कोई नहीं, 25 ml किया तो 25 45 हो गया। ओके, जरा सा कम हो जाएगा। 75 तक डालो, 75 तक पानी डालो। 75। It's an interesting observation you made कि 45 है। चलो and watch what happens. बस अब इंतजार करो। अब डालो वो 75 ml डालो। Watch what's happening. पानी सबसे आखिर में डाला था, but watch what's happening. तो ये क्यों हो रहा है? So it's going to float on water. इसको हम कहते हैं डेंसिटी कॉलम बिकॉज सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? यहाँ सबसे नीचे है ग्लिसरीन है, फिर उसकी दरमियानी डेंसिटी और फिर ऑयल। आपने पानी को बाद में डाला था, बट व्हाट हैपेंड टू द वाटर? द ऑयल केम अप, सो ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, राइट? एंड वाटर floats on glycerine because water is less dense than glycerine. But we haven't stopped with the fun as yet. Okay? So now you've all got your density columns? Yes. Okay.
आपने फुटेज में देखा कि बच्चे डेंसिटी कॉलम उन्होंने बनाया और आपको भी अब मालूम हो गया है कि वो क्या है, बट आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट कि जो मैं उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रही थी और जो कि उनकी वर्कशीट पे भी दे गई थी कि जी आपने यू आर गोइंग टू स्टार्ट with the cylinder which contains the glycerine और जिसमें 25 ml glycerine का है, and then you are going to pour oil in it first, not water but oil, and you've seen from the footage why that makes it an exciting process कि वो फिर पहले oil डालते हैं जो कि हम भी यहाँ आपको डाल के डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, और इनिशियली जब आप डालते हैं तो जो लिक्विड्स हैं दे मिक्स अप टुगेदर, पर अब आप देख रहे हैं कि नीचे है ग्लिसरीन का सेगमेंट और ऊपर बड़ा क्लियरली आपको ऑयल का सेगमेंट या लेयर नजर आ रही है. एंड एज यू नो फ्रॉम द वैल्यूज दैट ऑयल इज less dense compared to glycerine. वो 1.2 grams per centimeter cubed है और ऑयल जो है उसकी डेंसिटी हमारी है 0.88 grams per centimeter cubed. तो अभी तक तो ये सिचुएशन है. फिर जैसे आपने फुटेज में देखा कि हमने उन्हें कहा कि अच्छा जी अब आप पानी डालें, but as you know they didn't have 25 ml of water, they had 40 ml of water. So उन्हें to make sure that they put 25 ml of water, we went through this process of asking them कि अच्छा जब आप 25 ml डालते जाएंगे, 25 ml ग्लिसरीन में 25 ml ऑयल डालेंगे तो कितना लिक्विड टोटल हो जाएगा, फिर पानी डालेंगे तो वो 75 ml हो जाएगा. So it's almost 50 ml now, and if they so आप इतना पानी डालें कि आपकी लेवल जो है वो तकरीबन 75 ml हो जाए, उससे थोड़ी सी ज़्यादा कम, that's not a big deal. So that discussion was important, and then you can see that it is exciting because वो ये देख रहे हैं कि अच्छा जी आप पानी डालते हैं तो although पानी को आपने ऊपर डाला है but पानी बड़ी जल्दी it sort of sinks into the oil and it begins to form a very clear layer in the middle in between glycerine and oil. So this is what your density column is. एक column या एक सतून बना हुआ है और उसको density column क्यों कहते हैं? Because liquids are layered according to their density. We have the one with the highest density at the bottom, and then we keep going one with the least density at the top. So they will now be expected कि अच्छा जी अब उन्होंने ये बना लिया तो आप अपना observation सिलेंडर बनाएं कि जो एक्चुअल आपने देखा वो बनाएं. तो ज़्यादातर की तो प्रेडिक्शन भी यही थी, वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे. सो नाउ दे आर एक्सपेक्टेड टू फिल इन देयर ऑब्जर्वेशन सिलेंडर. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फुटेज. So now draw your observation cylinder. Do the liquids. उसके बाद जब draw कर लो, उसके बाद सवाल है do the liquids mix together or form distinct layers? Distinct. You are learning new words in English. Distinct का पता क्या मतलब होता है? मतलब पता चल गया ना? करके तो मतलब आ जाता है. That's how we learn language. Distinct, अलहदा, मुनफरिद. Okay, so I'm just going to put that down here also. कि distinct का मतलब होता है, I'm going to put that down here. Distinct is अलहदा, मुनफरिद. जब किसी की खसूसियत की बात करें तो हम कहते हैं जी बड़ी ये डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एकदम अलहदा कर दे किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे से या किसी शख्स को दूसरे से. आपकी पर्सनालिटी बड़ी डिस्टिंक्ट हो सकती है. इट्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. ओके, so you respond to that question. Did the liquids mix together or did they form distinct layers? कि वो जो उनकी तह थी वो
अलग-अलग थी over there. So, and then 13. What is the relationship between density of a liquid and its position in the measuring cylinder? जब अपना observation cylinder बना रहे हो ना, उसमें liquids को भी label करो और साथ उनकी density भी लिख दो नीचे, ताकि तुम लोग को भी पता चले कि क्या density का relationship है. यानी अगर oil लिख रहे हो, label कर रहे हो, तो साथ oil की जो तुम्हारी readings में density है, वो भी लिख दो. चीज कह रहा है आपको density भाई what is the relationship between your liquid that is at the bottom उसकी density सबसे कम थी सबसे ज़्यादा थी and that's what you need to see, okay, and then say what its density was, because scientists फिर बड़ी measurements को quote करते हैं कि जी we had our glycerine was at the bottom because it had the highest density value जो आपकी value. Water was in the middle because its density was in between glycerine and oil, and जो सबसे top पे होता है उसकी हमेशा density सबसे कम होती है. बच्चे अब अपना ऑब्जर्वेशन सिलेंडर ड्रॉ कर रहे हैं. ये भी उनके कम्युनिकेशन स्किल्स की एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस होती है और मैं उनको कह रही हूँ कि जी अच्छा आपने लेबलिंग ज़रूर करनी है, ना सिर्फ ये कि ये कौन से लिक्विड्स थे पर उनकी डेंसिटीज क्या हैं. और फिर ये क्वेश्चंस 12 और 13 उन्होंने रिस्पॉन्ड करने हैं कि जी डू द लिक्विड्स मिक्स टुगेदर और फॉर्म डिस्टिंक्ट लेयर्स. सो दिस इज द पावर of actually doing inquiry based learning इस तरह कि अब distinct का लफ्ज़ का मतलब उन्हें वैसे नहीं मालूम. अगर मैं separately उनसे पूछती कि तुम्हें मालूम है distinct क्या होता है, they may not have been able to tell, but layers का वो मतलब जानते हैं. layers का मतलब ये है कि जी ये तहें बनी हुई हैं liquids की. So then when I asked them, well, do they form distinct layers? You know what distinct is? They immediately said, इसका मतलब है कि अलग-अलग layers बन गई. फिर वो हमने उनके वर्ड बैंक में भी रिकॉर्ड किया. एंड देन द फैक्ट कि उन्होंने अपनी जब लेबलिंग की तो डेंसिटी की वैल्यूज़ भी साथ साथ उन्होंने लिखी हुई थी. और फिर क्वेश्चन 13 जो था कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड एंड इट्स पोजिशन इन द मेजरिंग सिलेंडर. सम चिल्ड्रन नीडेड अ बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन. मैंने कहा पोजिशन का मतलब ये है कि जी वो कहाँ पाया जाता है मेजरिंग सिलेंडर में और डेंसिटी का क्या ताल्लुक है, which we'd already explored. So you know they knew कि अच्छा जी रिलेशनशिप ये है कि जो सबसे बॉटम पे होगा उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, जिसकी मिडिल में है, दरमियान में है, it's in the middle, and the one at the top has the least density. So let's see the next footage. मैम देखिए हमारा जो वाटर की है वो है 0.8, लेकिन जो ऑयल की है वो 0.89. Yes, but then obviously there's a problem here. You're right. ये मैंने नोटिस नहीं किया कि तुम लोगों की तो पानी की डेंसिटी कम आ रही है और एक्चुअली तो तुम देख रहे हो कि नहीं है. So ये तुम्हारा कोई error है in your measurement. So you know you could use a value of, you can pick up any value from here which is more than this. ये closer ये है तो तुम 0.98 यूज कर लो. So that tells you, very good that you pointed it out. I didn't notice it. That immediately tells you there's an error in your measurement, because you can tell from here that this is denser. So कहीं तुम लोगों ने कोई गड़बड़ कर दी. That is fine. That's how we see it. So I know I'm very very happy that because that's how I'm not singling you out, but ये जो है और यहाँ हमने identify किया क्योंकि बाकी सारों का एक ही पैटर्न था. पैटर्न देखते हैं ना फिर क्या है कि जी तो ये अभी हमने डिस्कवर किया कि इनकी तो डेंसिटी पानी की ऑयल से कम आ रही है. I didn't pick that out, so I'm glad you pointed that out. Well, that's good science. Good science is not getting perfect values. Do you understand that? Good science is looking at patterns, looking at knowing what your errors are. अच्छा, हमने थोड़ा सा चीट किया है बिफोर गेटिंग टू द क्लाइमैक्स, और वो ये है कि जैसे मैंने जब आपके साथ ओवरऑल हमने वैल्यूज शेयर की डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स की, एंड आई सेड दैट यू नो देयर वर 2 out of 7 ग्रुप्स जिनकी जो वैल्यूज थी ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा आ रही थी कंपेयर टू वाटर, बट आई प्रिटेंडेड
not to notice it at all. तो वो एक group है जिसमें there's this very active child. वो बच्ची अब शी इज वॉचिंग वट एवर इज हैपनिंग, वो देख रही है कि जी मेजॉरिटी की भी यही वैल्यूज आ रही हैं कि ऑयल की डेंसिटी कम है पानी से, फिर उसके सामने भी आ रहा है, बट इट्स ट्रबलिंग हर कि भाई हमारी वैल्यू गड़बड़ थी. सो शी वॉन्ट्स टू शेयर दैट, एंड दैट इज व्हेन आई टेक इट अप बिकॉज आई was looking forward to that opportunity कि ये कोई बच्चा इस चीज को नोटिस करे या शेयर करे, चाहे कि मैं ये शेयर करूं. And that's the important thing, as I say, कि हम एक ऐसी environment create करें where children can share कि जी irregularities आ रही हैं. So then we go back to it and I tell them कि look, I didn't even notice this thing, and what is positive is that you noticed it and you point, you are worried about it. And that's what good science is. And obviously it means that one needed to make more careful measurements. So careful से अलावा ये कि क्योंकि वो values इतनी करीब हैं, तो इसलिए वो जरा सा 1 मिलीलीटर ऊपर नीचे से उन values में फिर overlapping हो जाती है. Which is why I pointed out कि जी असल में तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है. So now let's get to the climax and the final footage. अब एक prediction और करनी है before you actually test it out. और वो prediction note करनी है. So I need a little bit of your patience. Okay? Now, you know what the densities of these three liquids are, and you have 2 solids in your trays. Yes. You have the iron nail, and you have your Plastic dye. All I want, you don't do it right now, you make a prediction. And it says, number 14 says, using the information about the density in table 1, वो जो शुरू की table थी जिसमें सारी densityयाँ डाली हुई थी, predict what will happen if you drop an iron nail into the measuring cylinder. इस अगर measuring cylinder में iron nail डालोगे तो उसको क्या होगा? पहले आप उससे डिस्कस कर लो, फिर then I want everybody to be quiet and I'll hear your views. Okay, अच्छा अभी नहीं करना, अभी नहीं करना. अच्छा मुझे पहले ये बताए कोई बच्चा, आप बताओ कि अगर ये आयरन नेल हम इस डेंसिटी कॉलम में डालेंगे तो आपकी क्या पेशीन गोई है, क्या होगा? इसकी डेंसिटी सब लिक्विड से ज्यादा है, तो आपका ख्याल है कि ये सबसे नीचे पहुंच गया? अच्छा सारे मुत्तफिक? तो इसके बारे में तो सब मुत्तफिक हैं. तो बड़े प्यार से इसी तरह इसको टेढ़ा करके डालना है. I don't want the measuring cylinder being broken, just the iron nail. Please put that in, okay? Just the iron nail टेढ़ा करके slide it in. कोई बात नहीं अगर ये mix कर जाते हैं वो फिर ठीक हो जाएंगे. Now let's talk about the dye. Okay, बेटा आप मुझे बताओ कि ये जो इसको अगर जब हम डालेंगे तो इसको क्या होगा? सब अगर if you disagree you can raise your hands, don't start shouting no. हाँ? ये सिंक करेगा, किसमें सिंक करेगा? ये इसमें सिंक करेगा, ऑयल में करेगा सिंक? ऑयल में फ्लोट करेगा तो नीचे कैसे जाएगा? No, but sweetie, it has to sink through the oil to get to the middle. Yes. So is it going to sink through the oil or no? Now, why will it sink in the oil? You expect it to sink in the water as well? Yes. Okay. But where will it float then? So you expect that it will float on top of the glycerine. Okay. Now you can all put it down. इसका था
जाता है ना, so it takes a while to go down, but eventually it will sink through oil and it does sink through the water. So वो सब में डूब जाते हैं, पानी में और ऑयल में और पानी में, और किस पे फ्लोट कर रहा है? ग्लिसरीन, बिकॉज उसकी डेंसिटी ज्यादा है। अच्छा जी, फाइनल फुटेज तो अब आपने देख ली, एंड यू नो हाउ एक्साइटेड द चिल्ड्रन वर एट द टेल एंड, और उन्होंने बड़ी क्लैप वगैरह भी किया। तो एज इन द केस ऑफ लिक्विड्स दे आर आस्क्ड कि अच्छा जी अब आपको इसकी डेंसिटी भी पता है, प्लास्टिक डाई की इसकी भी पता है, तो आप पहले तो ये प्रिडिक्ट करें कि अच्छा अगर आप, आई स्टार्टेड आउट विद दिस आयरन स्क्रू, इसको डालेंगे तो क्या होगा। तो ये यू नो इट्स अ हेवी थिंग, सो द किड्स वर वेरी क्लियर कि जी ये तो इसने तो सिंक कर जाना है। एंड आई सेड भाई किधर सिंक कर जाएगी ये वो, कि देयर इट विल बी राइट एट द बॉटम, एंड ट्रू एनफ उन्होंने डाला एंड देयर इट वाज। आई सेड कि हाँ केयरफुली डालो, क्योंकि फिर वो हमारा शीशा ना टूटे, तो वो तो धड़ास करके तो वो बॉटम पे आ गया। इंटरेस्टिंग इसकी प्रेडिक्शन थी, क्योंकि अब उन्होंने ये तो देखा है कि ये पानी में सिंक कर जाती है, बट दे हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ पुटिंग दिस डाई इन द ऑयल। और अभी जो हम चाह रहे हैं, सो दैट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज इट टेल्स वन एज अ टीचर कि अच्छा अभी वो बहुत क्लियर कनेक्शंस नहीं हुए कि जी वो देखें कि इसकी डेंसिटी जो है वो ऑयल से भी ज़्यादा है और पानी से भी ज़्यादा है। ऑफ कोर्स जो एक्चुअल वैल्यूज़ बच्चों ने कैलकुलेट की, जो मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि कुछ इसकी वैल्यूज़ आ रही थी जो पानी से कम थी, बट देव नाउ वर्कड इट आउट कि पानी में जब हम इसको डालते हैं तो ये सिंक कर जाता है। पर अभी भी कुछ बच्चे कुछ कंफ्यूज हैं कि अच्छा जी जब डालेंगे ऑयल में तो फ्लोट करेगा पर पानी में सिंक कर जाना चाहिए। सो वी नीडेड टू हैव दिस डायलॉग कि भाई देन हाउ इज इट गोइंग टू गेट टू द वाटर। सो उनके लिए इसलिए वो इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट कि जब एक्चुअली वो डालते हैं इसको एंड दे वॉच what happens, and as we are watching now as well, that the dye is slowly sinking through the oil and the water, और अब आपका जो dye है वो यहाँ बैठ गया है, it's not sinking into the glycerin. So it tells us कि उसकी density oil से भी ज़्यादा है, पानी से भी ज़्यादा है, but it is less dense than the glycerin. So this is the story of our density column, and we brought this lesson to an end with the children then also labeling their screw and their dye, और उसकी density भी label की गई, और फिर उसकी value फिर मैंने उनको यही suggest किया गया कि जी जो values आपकी वो हैं which lie between the value of glycerine and water, आप वो यूज करें। सो नाउ दे नो कि अच्छा जी वी हैव टू यूज अ रिलायबल सेट ऑफ डेटा। और जो इम्पोर्टेंट बात उनको क्लैरिफाई हुई, जिसका हमने अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में भी जिक्र किया, कि वो देख रहे हैं कि अच्छा जी वेदर इट्स ऑब्जेक्ट्स और लिक्विड्स, कौन कहाँ फ्लोट करेगा डिपेंड्स अपॉन इट्स डेंसिटी। यानी कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स भी उन्हीं लिक्विड्स में फ्लोट करेंगे where their density is less than those liquids. जहाँ उनकी density ज़्यादा है वो sink कर जाएंगे, और liquids in themselves will float on liquids जिनसे कि वो कम dense हैं। So ये हमने बड़े packed उनके lessons थे। उन्होंने ये 5-6 lessons में ये बड़े जो है मीनिंगफुल और लेकिन डीप कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनके साथ हमने उनको एक्सपोजर कराया, और उनका पहले हमने जैसे देखा even mass volume के concepts had not been fully developed. So now was the time, and one expects they will move on with it, कि हम जो उनके साथ एक final lecture करें before their assessment, उसमें अब ये जो सारे concepts हैं उनके बारे में सोचने का, उनको process करने का, and indeed कुछ reading assignments पे reflect करने का मौका उनको देना चाहते हैं। तो हमारे जो अब अगली हम सारी आपको फुटेज दिखा रहे हैं with very little input and commentary from me because you will just actually see the footage, उसमें हम जो हमारा बच्चों के साथ एक्सटेंसिव सेशन था, पहले तो हमने उनको 2
वन आफ्टर द अदर रीडिंग असाइनमेंट्स दी थी। तो हम वो 2 रीडिंग असाइनमेंट्स डिस्कस करते हैं और फिर हमने उनको एक प्रॉब्लम सेट दिया डेंसिटी में और हम उसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। तो हमने जो उनको पहला जो रीडिंग असाइनमेंट का सेट दिया, एंड दीज विल बी पार्ट ऑफ योर रीडर्स एंड वी विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस ऑन देम, वो जो थी रीडिंग असाइनमेंट, दैट वाज ऑन द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। और वो इसलिए क्रिटिकल थी क्योंकि अब ये 8th ग्रेड के बच्चे हैं और यू नो their curriculum requirements are, and which is cognitively appropriate also, that they should now begin to see what is the difference between mass and weight. एक तो ये, दूसरा रीडिंग असाइनमेंट्स की भी ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि भाई ऑब्वियसली दे आर रिटन इन अ लैंग्वेज विच इज चाइल्ड फ्रेंडली और आप भी पढ़ के खुद फैसला करेंगे कि हाउ इजी और डिफिकल्ट दे वर, कि उनकी ट्रेनिंग हो कि जी वो कोई चीज़ पढ़ के फिर उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें और जहाँ सवाल उठाएं और उसके ऊपर एक डिस्कशन हो। सो जो हम अब आपको अभी सेगमेंट दिखा रहे हैं विच इज़ अ लिटिल एक्सटेंसिव, उसमें फिर हमने ये मास एंड वेट की जो रीडिंग असाइनमेंट है उसको हमने बेसिस बनाया है, एंड आई हैव हैड एन एक्सटेंसिव discussion, or rather have given them an explanation of the difference between mass and weight. So let's take a look at it. So by 8th grade you should also know कि mass और weight, जिसे हम वजन कहते हैं, उसमें थोड़ा सा फर्क है। आपस में बड़ी गहरी रिश्तेदारी है लेकिन फर्क है। अब क्योंकि हम सारे जमीन पे रहते हैं, इट इज ऑल्सो ट्रू कि जिस चीज का मास ज्यादा होता है उसका वजन ज्यादा होता है। ये बात सही है। जब हम छोटी जमातों में पढ़ते हैं हम कहते हैं कि जी जो चीज भारी है, अगर हम मास और वेट को हम समझते हैं एक ही चीज है, पर उसका थोड़ा सा फर्क है। आपकी जो रीडिंग असाइनमेंट थी, अब आप लोग पढ़ रहे थे वो रीडिंग असाइनमेंट, आप बताओ वो चीनी वाला क्या एग्जाम्पल था, जरा हमारे साथ शेयर करो। वो शुगर वाला एग्जांपल, वो जो आपने ऑस्ट्रोनट्स वगैरह में, हाँ, उसमें ये था कि हम लोगों ने वेट और मास के डिफरेंशिएट किया था कि वेट कैसे फाइंड करते हैं और मास कैसे फाइंड करते हैं। वेट में जो था वो हम लोग को इस तरह कैलकुलेशन थी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बताया था हमें, ग्रेविटी का जो अर्थ की ग्रेविटी है वो होती है 9.8 न्यूटन्स और उसको हम डिवाइड करते हैं 6 से। If you go where? If you go where, if you go to the, we talk about the gravity of moon. Okay. So then we'll divide it. Then we will get the answer of that how much weight it covers in the moon of 1 kg. Okay. So in other words, what you are saying is कि जो एक चीनी का अगर आप लेते हैं एक पैकेट जो 1 किलोग्राम मास, तो वो पैकेट अगर आप उठा के खलाई सफर अगर शुरू हो जाता है और आप मून पे चले जाते हैं, और जैसे हमारी इनसे डिस्कशन हो रही थी उस वक्त महक बैठी नहीं हुई थी, मैंने कहा और अगर महक के हवाले हम वो पैकेट ना करें ताकि चीनी को ना खाए और उस पैकेट में चीनी वही हो जितनी कि आप वो पैकेट सील्ड है 1 किलोग्राम का, तो आप बेशक चांद पे भी चले जाएंगे तो वो चीनी 1 किलोग्राम ही रहेगी, लेकिन उसकी वेट बदल जाता है। क्योंकि वेट जो होता है, वेट हम कहते हैं जी वेट पैमाइश होता है कि ये जो कशिश सकल है ना, जो ग्रेविटी है वो उसकी वेट इज द ग्रेविटेशनल पुल कि मैम मुझे कितनी फोर्स से खींच रहा है। हाँ, अब वो फोर्स जो है और वो ग्रेविटेशनल पुल या कशिश होती है दो चीजों के दरमियान जिनके मास होते हैं, होती वो कशिश मास की वजह से है। हमारी आपस में भी वो हो सकती है लेकिन हमारे मास इतने थोड़े हैं कि वो कशिश तकरीबन जीरो है, तकरीबन जीरो है, वो हम उसका एहसास ही नहीं होता। लेकिन जो जमीन है उसका मास तो बहुत ज्यादा है ना, इसलिए जमीन हमें अपनी तरफ खींचती है। तो ये जो कशिश सकल या ग्रेविटी फोर्स है उसकी वजह यही है कि आपका मास है और जमीन का मास है। ठीक है जी। तो जिस कशिश से जमीन आपको खींचती है उसको हम वेट कहते हैं या फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली तो बहुत सी फोर्सेस हो सकती हैं। मकनातीस जब खींचता है किसी
चीज को जो लोहे की बनी हुई है तो वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, लेकिन वो जो फोर्स है वो मकनातीस की वजह से है, तो हम उसे कहते हैं ये मकनातीसी कुव्वत है। ये है कशिश सकल जो कि जमीन के मास की वजह से और आपके मास की वजह से है। जब आप चांद पे जाते हैं आपके मास को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अनलेस के आप ये रास्ते में कोई टांग खुदा ना खास्ता टूट जाए और उसको हमें एम्प्यूटेट करना पड़े और तो फिर आपका मास बदल जाएगा। पर मून का मास जो है वो अर्थ से कम है या ज्यादा? कम है, बहुत कम है। It's 1/6 of the Earth's mass. That is why the pull of the moon, उसे भी हम gravity कहते हैं, but we say that is the gravitational pull of the moon. Here it is the gravitational pull of the Earth. तो मून का क्योंकि mass कम है तो जिस कशिश से वो आपको नीचे खींचता है वो कम हो, तो ये थोड़ा सा mass और वजन का फर्क है। अब क्योंकि हम जमीन पे रहते हैं और कहीं हम खलाई सफर नहीं कर रहे तो हमें अपने वजन में तो कोई फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि हमारा मास भी नहीं बदलता और जमीन का भी नहीं बदलता। और क्योंकि जमीन का बदलता नहीं है और आमतौर पे जब हमने अपने वजन का कंपैरिजन करना हो, अगर अब हम दोनों करेंगे अपने मासेस का कंपैरिजन तो मेरा मास तो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो जो जमीन का मास तो नहीं बदला, लेकिन जो कशिश है जमीन की वो बढ़ जाएगी क्योंकि मेरा मास ज्यादा है ना। तो मास पे कशिश सकल डिपेंड करती है, लेकिन वो दो चीजें जिनका मास हो उनके दरमियान, और उसको महसूस हम उसी वक्त करते हैं जब एक चीज का मास बहुत ज्यादा होना चाहिए कम से कम। अच्छा, ये जो हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं एंड ऑल्सो द सब्सिक्वेंट वंस, उसका एनालिसिस आप खुद करेंगे, and you know we'll help you by asking you relevant questions. So I'm just simply going to move on to the second segment. This is based on the reading assignment that they were given on the Titanic, which was this luxury ocean liner in the early sort of 20th century, जो कि कोलाइड किया एक आइसबर्ग के साथ एंड इट सैंक। तो वो बच्चों को फिल्म का तो पता है, शायद आप भी जानते हो, वो बड़ी मशहूर फिल्म है टाइटैनिक की। सो दे गॉट क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट, बट द डिस्कशन is very interesting, and as you will see that as we move towards the tail end of the discussion, they are raising interesting questions. So let's look at that footage. मैंने आपसे पूछा था टाइटैनिक की फिल्म किसने देखी, हाँ, तो ये टाइटैनिक की कहानी, और इसमें कुछ अंग्रेजी के जो मुश्किल लफ्ज है वो मैंने पीछे, हाँ ये मूवी, अच्छा ये मेरा प्रॉमिस है, वो मूवी जो है Tuesday, but we'll organize that movie for you guys. But that's a promise. It might have to be after your spring break, but you will get to see the Titanic. बेटा नहीं, घर में नहीं देखना, ये शर्त है कि घर में नहीं देखना। So ये जो शिप का हल होता है, let me just draw that for you, क्योंकि अगर ये है जहाज बना हुआ ऐसे और ऊपर ये जहाज की बिल्डिंग्स हैं, तो ये शिप का हल है। तो ये इसके अंदर कमरे होते हैं, बीच में उसके सारा इंजन रूम होता है, जहाँ सामान रखा होता है लोगों का वो होता है, किचन्स भी आमतौर पे नीचे होते हैं, लेकिन उसमें इसलिए सारा वो भरा नहीं होता, ऐसे कमरे होते हैं तो कमरों में हवा होती है, खुले कमरे होते हैं। तो ये जब आप टाइटैनिक की कहानी पढ़ेंगे तो कहानी तो आप हमने कल भी डिस्कस की थी, और हमने इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपको बताता है कि जी ये कितना उस वक्त मशहूर जहाज हुआ, और फिर ये क्योंकि बड़ा इसे कहते थे कि ये लग्जरी लाइनर है, यानी कि इसके अंदर जो बहुत पैसा लगाया गया और जिस किस्म के इसके अंदर कमरे थे और क्या कुछ था, और उस जमाने के क्योंकि बहुत मशहूर और अमीर लोग फिर उस जहाज पे गए, इसलिए जब बहुत से लोग मर गए, इसमें लिखा हुआ है 1500 लोग मर गए, और ये जहाज था कि ये तो कभी डूब ही नहीं सकता। और साथ इसके आपके पास एक आइसबर्ग की हम बात कर रहे थे ना, जो बर्फ के पहाड़ होते हैं, वो पीछे तस्वीर आइसबर्ग की भी दी हुई है जिसके साथ के टाइटैनिक टकराया था। ये तो जहाज स्टील का बना हुआ था,
तो जो स्टील की डेंसिटी है वो तो पानी से बहुत ज्यादा है। तो ये कैसे हुआ कि पहली तो बात ये कि जहाज फ्लोट कैसे कर रहा है, सारे जहाज कैसे फ्लोट करते हैं, तो वो उसी लिए कि क्योंकि उनके अंदर हवा भरी होती है, सिर्फ आयरन और स्टील नहीं होता, तो वो जो पूरी वॉल्यूम होती है, इफ यू डिवाइड मास बाय वॉल्यूम तो वो डेंसिटी कम हो जाती है पानी से, ठीक है ना। व्हाई डिड द टाइटैनिक सिंक? क्या हुआ कि टाइटैनिक ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी किसी तरह बढ़ गई ना पानी से, तो वो कहानी इसमें है। क्या ख्याल है कैसे डेंसिटी? आइसबर्ग से जब टकराया तो उसका हल डैमेज हो गया, उसमें बहुत बड़े होल्स हो गए, तो पानी ने जाके सारी हवा की जगह घेर ली, तो फिर वो मास उसका ज्यादा हो गया, तो फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, तो वो सिंक कर गया। तो ये आपकी जो आबदोजें होती हैं सबमरीन्स, उनका भी यही प्रिंसिपल है ना, सबमरीन्स ऊपर कैसे आती हैं और नीचे कैसे जाती हैं, क्या ख्याल है? मैथ ज्यादा कर लेते होंगे। मैथ ज्यादा कैसे करते हैं? एयर तो फिर कहाँ से करेंगे, मतलब ऊपर जब सबमरीन तैर रही होती है उस वक्त तो नीचे कैसे जाते हैं? इंसान नहीं होते होंगे जब ऊपर इंसान तो होते हैं ना। एक दफा सबमरीन में अगर से आप कहते हैं छोटी सबमरीन है तो उसमें कोई 40-50 तो नेवी के होते हैं लोग, तो वो तो होंगे, तो वो जब सबमरीन तैयारी होती है उस वक्त भी 40-50 होते हैं, जब वो नीचे चली जाती है तो भी 40 पर, तो वो तो उससे तो मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेस पे आती है, नेवल बेस पे तो बाहर निकलना पड़ता है ना सबमरीन को। सिलेंडर्स में एयर फिल कर नहीं मैम पहले तो ओपन होती है, तो जब वो बंद करते हैं एयर की वजह से, तो बल्कि उसको फ्लोट ही करना चाहिए। मैम वो बंद कर लेते हैं हाँ, तो एयर हो जाएगी, होगी ऐसे भारी पानी भर लेते होंगे। सबमरीन के अंदर बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, जब सबमरीन ने नीचे जाना होता है तो वो नीचे होते हैं ना टैंक्स, वो उन्हें खोलते हैं, उसके अंदर आ जाता है समुद्र का पानी और उसकी वजह से सबमरीन नीचे चली जाती है। जब ऊपर आना होता है तो वो पानी निकल जाता है। उसके अंदर हवा होती है ना, ये ट्राई हमें करना पड़ेगा। You have to try this. So you why don't you try? घर जाके सारे बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट है। टब में पानी भरो, वो आपका समुद्र हो गया, या सिंक में पानी भरो, वो समुद्र हो गया। कोई ग्लास ले, ठीक है ना, आमतौर पर बोतल भी लेते हैं तो मैं पता है वो फ्लोट करती है, ठीक है। फिर उसको पानी से जब भरते हो तो वो सिंक कर जाती है, ये भी सबने देखा है ना। Keep the bottle inside the tub under the water and try to get rid of the water. और थोड़ी सी इंटरनेट रिसर्च कर लो कि सबमरीन ऊपर कैसे आती है। तो ये सवाल जो है इसका हमें जवाब ढूंढना है। अब हम चेक करेंगे कि क्या मैकेनिज्म होता है कि पानी सबमरीन में से निकल जाता है, क्योंकि जब वो टैंक के दरवाजे खुलते हैं और सबमरीन नीचे जाती है तो एकदम पानी अंदर आता है। सबमरीन्स की थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि कैसे वो, उन्हें बैलेस्ट टैंक्स कहते हैं, कैसे वो भरते हैं और कैसे खाते हैं, ठीक है जी, बिकॉज यू रेज्ड अ गुड क्वेश्चन। The only thing I want to point out is, and encourage you to do the research, is that they made a very interesting reflection. जब हम बात कर रहे थे कि जी जो सबमरीन्स हैं वो कैसे डूबती कैसे हैं, how do they submerge, go under the water, and then children were concerned कि अच्छा फिर वो ऊपर कैसे आती हैं, क्योंकि एक दफ़ा पानी उनके वो बैलेस्ट टैंक्स में भर जाता है तो फिर वो पानी निकलता कैसे है बाहर। So I said, well, that's a good, question, and I suggest that you do some research on it. एक तो एक्चुअली जाके जिन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा वो करें एक्सपेरिमेंट कि अच्छा जी पानी की
एक टब लें और फिर उसमें एक खाली बोतल डालें एंड देन व्हेन दे आर टेकिंग इट आउट दे सी व्हाट हैपेंस कि जी पानी क्या आराम से ही निकल जाता है, व्हाट हैपेंस, एंड देन actually do some research since these children had access to the internet कि अच्छा किस तरह काम करती हैं submarine. So we're hoping that you are also going to do that research. So we're not providing any easy answers. अच्छा, अब जो अगले दो segments हम आपको दिखा रहे हैं they are based on जो हमने बच्चों को ये problem set दिया and that we are sharing with you, where we want them to be able to solve problems related to density. अब कहने को वो simple problems हैं कि अच्छा जी अगर किसी जो object है उसके mass और volume दिया हो and it's made of a specific substance, तो एक तो ये कि वो density निकाल सकें, और अगर density और mass दिया हुआ है तो volume निकाल सकें, और फिर अगर density और वॉल्यूम दिया हुआ है तो मास निकाल सकें. यूजुअल अप्रोच जो बच्चे लेते हैं वो ये होता है कि जी वो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम का रट्टा लगा के और वो बस एल्जेब्रिकली उसको इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करते हैं. बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट इज कि जी इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू understand the underlying, not just the underlying concepts, पर ये जो आप operations भी करते हैं ना division multiplication के, उनको भी meaningful समझने की meaningful तरीके से समझने की ज़रूरत है. So पहला जो मैं आपको segment दिखा रहे हैं उसमें एक वो sample problem है जो कि फिर मैं बच्चों के साथ discuss करती हूँ, and I'm trying to model the kind of thinking that should go into problems like this. First page पे एक sample problem है to help you think things through. तो वो sample problem मैं आपके साथ आपको समझाऊंगी and then you start doing your problems and we'll do 1 or 2 in class and the rest then you can do as homework. Density के सवाल में 3 किस्म के सवाल हैं. एक तो ये होता है कि हमने आपको mass और volume दी हो और हमने कहा हो कि density निकालो, ठीक है, हाँ, या हमने आपको डेंसिटी और मास दिया और कहा वॉल्यूम निकालो, या हमने आपको डेंसिटी और वॉल्यूम दी हो और कहा हो कि मास निकालो, ठीक है. अच्छा, अब एक तरीका तो ये कि हम रटा लगा, ठीक है, और उससे कभी काम चलता है, कभी नहीं चलता जब रटा फेल हो जाता है. बेहतर तरीका ये होता है कि जरा समझ लें उस प्रॉब्लम के 3 हिस्से. This is the solved problem I'm doing for you. KG, you have a stone. You have a stone that has a mass of 15 grams and a volume of 5 centimeters. Now you have, the question I ask is what is the mass of 1 centimeter cube of that stone? ठीक है जी. अच्छा, so how will we do that? A good way to visualize it, it doesn't mean that you have to draw it every time, but in your head, the stone may be of any shape whatsoever. लेकिन अपनी मदद के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि अपने सर में, अपने हेड में इमेजिन करते हैं कि 5 centimeter cube means I'm thinking of 5 cubes. I'm thinking of 5 cubes. 1, 2, 3, 4, 5, जिसकी के and each cube is 1 centimeter cube वॉल्यूम है. मैंने यहाँ जो आपका डायग्राम बनाया है उसमें तो जरा अच्छी तरह क्यूब्स बनाई हुई हैं. सब देख रहे हैं, सबको नजर आ रही है अपने पेज पे. अच्छा, सो यू आर सेइंग 5 सेंटीमीटर क्यूब्स का मास 15 ग्राम्स है, तो ये एक क्यूब जो है उसका मास कितना है? हाँ, 3. So what did you do? You said to find the mass of 1 centimeter cube, I have to divide 15 grams by 5. So you ask yourself the question, if the mass is equally shared by 5 centimeter cube, how much is the share of 1 centimeter cube? So mass of 1 centimeter cube is going to be equal to 15 divided by 5, and that's 3 grams. Now, what is density? 3 grams per cubic centimeter, because density is the mass of
1 क्यूब. So in other words, जब आपको ये सवाल पूछा जाए कि जी एक क्यूबिक सेंटीमीटर का क्या मास है, तो आप एक लिहाज से डेंसिटी निकाल रहे हैं. That is how we define density. If I say that the density of something is 17 grams per cubic centimeter, तो मुझे बेटा आप बताओ, what is the mass of 1 cubic centimeter? If the density of a substance is 17 grams per cubic centimeter, what is the mass of 1 cubic centimeter? If the density of a substance is 17 grams per cubic centimeter, think of the definition of density. What is the mass of 1 cubic centimeter of that substance? 17. सबने सोचो हो ये तो बड़ा कोई गंभीर सवाल है. The answer is in the value of density. Density का मतलब ये है 17 grams per cubic centimeter means that the mass of 1 cubic centimeter is 17 grams. Got it? Okay. Anyway, I'm just so. In other words, अच्छा. अब ये एक तो ऐसे सवाल ये होता है कि mass और volume दियो, बताओ कि density निकालो. यानी कि find the mass of 1 cubic centimeter. That's what density is. So you did that. Okay. Now you could be asked कि अच्छा जी, I have the same stone. I have the same stone. उसको मैंने बदला नहीं, उसका मटेरियल नहीं बदला, हाँ, और उसकी जो वॉल्यूम है 120 सेंटीमीटर क्यूब. और अब मुझे बताओ कि उसका मास क्या होगा. अच्छा, अब अगर आपको डेंसिटी पता है, यानी यू नो दैट द मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर is 3 grams. ठीक है ना? So 1 cubic centimeter contains, or 1 cubic centimeter has a mass of 3 grams. तो फिर 120 cubic centimeter means 120 cubes. Each of 1 centimeter cube. So what have you done? You've said I'm going to multiply 120 by 3 because each cube has a mass of 3 grams and 120 cubes. वो सारा मुझे repeatedly add करना पड़ेगा, तो वो multiplication ही हो गई ना. So that will be, if you work it out, 0 आ गया and 3 times 12 is 36. So 360 grams. Does everybody understand that? Yes. So one kind of problem, mass and volume, find density. Another kind of problem, if you have density and you are given the volume, find the mass of that stone. Now, the third type of question can be where you are given the density and you're given the mass, not the volume. So your reasoning has to be very, very clear. What is the volume of 180 grams of this स्टोन? यानी कि ये वही किस्म है, हाँ. अब इसमें हम क्या सोचते हैं, डेंसिटी हमें दी गई हुई है, वी नो डेंसिटी. सो यू गिवन दो चीजें आपको जरूर दी होंगी, या आप डेंसिटी पहली इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं. तो आप अगर डेंसिटी दी हुई है तो यू नो दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है दैट हैज अ मास ऑफ 3 grams. तो आपको पता है, और इफ यू गो इन द रिवर्स, 3 grams occupy 1 centimeter cube. So if you can find out how many cubes of 3 grams fit into 180 grams, you will find out 60. Very good. That if you find out the number of cubes, 1 centimeter cubes fitting into 180 grams. उसके लिए हर क्यूब का मास 3 grams है. So you will find out 180 over 3,
60 cubes, and that means 60 cubic centimeter, because the volume of each cube, little cube, is a cubic centimeter. ये जो अगले सेगमेंट अब आप देखेंगे उसमें आई वांट द चिल्ड्रन के वो कम से कम 2 जो प्रॉब्लम्स हैं इस प्रॉब्लम सेट में उनको कलेक्टिवली ग्रुप में बैठ के, सबके अपने अपने ग्रुप्स हैं, और सॉल्व करने की कोशिश करें यूजिंग द अप्रोच एंड द वे ऑफ थिंकिंग दैट वी हैव अडॉप्टेड इन द सैम्पल प्रॉब्लम. अगर वो नहीं कर सकते ड्यूरिंग दिस क्लास सेशन, दैट्स फाइन, दीज डिस्कशंस विल बी ऑनगोइंग, बट एटलीस्ट आई वांट टू सी कि अच्छा जी अब वो ज़रा सोचना शुरू करें. आई वांट देम टू शेयर देयर आइडियाज़ कि कहाँ अटक रहे हैं, ताकि मुझे भी समझ आए कि इनकी क्या अप्रोच है. सो अगले सेगमेंट में आप बेसिकली देखेंगे कि जी वो 2 प्रॉब्लम्स जो हैं जो हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, प्रॉब्लम 1 एंड 2. प्रॉब्लम 1 को एसेंशियली टैकल कर रहे हैं और थोड़ा सा 2 को करते हैं टैकल, एंड देन आई डू अ सिलेक्टेड पोर्शन of the second problem because I want them to think about it. हमने अब ये एक डिस्कशन, एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम की है कि जी there are 3 different ways of doing these density problems. Okay, now what I want to do is I want you to do 2 of the problems here in class with me, and then the rest you can do at home. अच्छा, तो आपका पहला प्रॉब्लम है, so each group can do it together. So try and do the first problem together. हाँ जी, कुछ आइडिया हो रहा है कि क्या करना है हमने? एंड यू नीड टू शो द वर्किंग. अगर डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो मुझे सब नजर आना चाहिए, ठीक है ना? ओके, यूज सेंटेंसेस एक्सेट्रा इफ यू नीड टू एक्सप्लेन. तो तुमने लिखा 25 और mass 25 grams. Okay, so then how will you find the mass of 1 centimeter? Okay, so then you say mass of 1 centimeter cubed is equal to, and then show that division. Okay. हाँ, वो ऐसे ही लिख सकते हैं, वो सीखा है. वेरी गुड. सो दैट यू डोंट हैव टू डू दैट, बट देन यू से ओके दिस इज द मास ऑफ 80 grams. 16 what? वेरी गुड, एक्सेलेंट. अच्छा, अब उसी तरह आप इसकी वर्किंग नहीं मुझे दिखाई, एक ही वर्किंग दिखाइए. सबकी वर्किंग बच्चों, सबकी मुझे जो जगह आपको दी हुई है उसमें सबकी वर्किंग मुझे दिखाइए आप. Jani, what is the volume of 80 grams of this metal? Tell me 1 centimeter cubed के कितना mass है? 5 grams. ग्राम लिखे ना, और इसका यूनिट क्या होता है? 5 grams पर, तो लाइन डाल के सेंटीमीटर क्यूब्ड करें. अच्छा, अब आपको ये पता है, ये ऐसे m, ठीक है? अब आपको ये पता है हाँ कि 5 grams fit into 1 cubic centimeter. So you have to find out how many cubes of 5 grams fit into 80 grams. So what will you do? Yes, so what you're going to say is number of cubes of 5 grams that fit into 80 cubes. इस तरह याद रहेगा ना? Into 80 grams, और each क्यूब का मास 5 grams है. तो फिर नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी, वो शो करो क्या डिवीजन कर रहे हो. 80 divided by 5. So that's the number of cubes. 16 cubes. 16 cubes. So उनकी वॉल्यूम फिर क्या हुई? एक क्यूब की 1 cc होती है.
So it will be 16 cc centimeter cube. Do you understand that? So अगर ये इस तरह लिखो ना तो अपनी रीजनिंग समझ आ जाती है। 1 सेंटीमीटर क्यूब 5 ग्राम्स है, तो 40 क्यूब्स का कैसे मास निकालोगे? 1 का 5 ग्राम्स है, 2 का कितना होगा, 3 का कितना होगा? तो ये क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो कि तो अगर ऐड इस तरह करते जाओ तो डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं? रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन। जैसे ऐसे डायग्राम थी, 5 cubic centimeter meant 5 cubes, 12.2 means how many cubes? 12 cubes and 0.2. 0.2 means 2 over 10 or 1 over 5. So 1/5 of a cube. एक क्यूब so इतना सा, पूरी क्यूब नहीं, फिर छोटी सी, उसका 1/5 हिस्सा। अच्छा, जो पहला प्रॉब्लम था वो है कि जी a certain piece of metal has a mass of 125 grams and a volume of 25 cubic centimeter. Okay, what is the mass of 1 centimeter cubed of this metal? How did you find? हम लोग 125 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा, और 5 जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का mass है। सिर्फ 5 है कि कुछ और कहना चाहिए? 5 ग्राम। 5 grams. So the mass of 1 cubic centimeter will be 5 grams, and you found that out by dividing 125 grams by the volume, and that gave you how much mass is it? 1 cubic centimeter, which is 5 grams. Does everybody agree with that? Yes. Okay. So my next question is to you, beta. If you say in part A you found out that the mass of 1 cubic centimeter is 5 grams. The next question is, what is the density of this metal? Per cubic centimeter. Remember your unit. So you know you don't have to do, you have to do any calculation for that? No. No, because you've done it in the first part. You found out the mass that's contained in 1 cubic centimeter, and that is your density. Yes. It's just that you have to write the correct unit. So what is the volume of 80 grams of this metal? पहले तो मुझे अपनी thinking explain करो, पहले ये नहीं मुझे बताना मैंने divide किया या multiply किया। मैम को जो मैथ उसका जो मतलब हमारे पास मैथ को डिवाइड करें डेंसिटी के साथ, तो फिर उसका 16 सेंटीमीटर वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा हाँ, लेकिन मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन क्यों आप करते हैं? ये यहाँ पे जाएगा, Why do you do that? 5 हो जाएगा, 80 ग्राम्स के अंदर कितने क्यूब्स फिट होते हैं, और हमें इसका आंसर मिलना था उसके साथ डिवाइड करके। 80 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी वो ये कह रही है कि हमने देखना था कि 80 ग्राम्स में 5 ग्राम्स की कितनी क्यूब्स फिट होती हैं। Yes. Excellent. So can somebody else give the same explanation to me? Can somebody explain it to me? Why do you divide 80 by 5 to get the volume? Can somebody explain that to me? Yes, ma'am. Okay, you explain it to me, Lisa. Ma'am, we have mass 80 grams Total mass is 80 grams. Okay. and 1 centimeter cube is equal to 5 grams. The mass of 1 centimeter cube is 5 grams. ठीक So है? we have to find that how many boxes are fit in 80 grams. Excellent. Excellent. All cubes, all boxes, all packages, or whatever you want to call it. But her package की volume 1 centimeter cube है. She's used a different language, but it shows me that she understands it. Then how many boxes are going to fit in? So you have to divide 80 by 5 to see कि अच्छा जी ये कितने boxes बनेंगे. हर एक का mass 5 ग्राम है. Boxes या packages या cubes, हमें पता है हर box या package की volume 1 centimeter cube है. अच्छा जी. और आखिरी जो इस सवाल का हिस्सा था वो ये था कि what is the mass of 40 centimeter cube of this metal? Can somebody explain that to me, how they did that? Yeah. We have 40 cubes. 40 cubes का हमें मैथ को पता चलना है कि 40 cubes का मैथ क्या होगा।
1 क्यूब का मास है 5, तो हम लोग 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, ताकि हमारे पास 40 क्यूब्स का मास का mass. So you're both excellent. Does everybody agree? जो हमारे सारे से कि यही तरीका है, क्योंकि हमने ऐड करना है ना 40 क्यूब्स हैं. 5 ग्राम्स को हमने 40 दफा ऐड करना है ना. 5 + 5 + 5 + 5. तो हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक वो शॉर्टकट होता है ना. यही होता है ना. जब आप कहते हैं 3 × 2 करो, that means 2 + 2 + 2. So we've learned how to do that shortcut. So you do 40 × 5. Excellent. You can sit down. Are you all now clear about the reasoning? Now quickly do the second problem, because आप इधर एक्सप्लेन करें डी पार्ट. बाकी पार्ट्स कर ली? Yes, ma'am. Okay. अच्छा. Now listen to the last part. Actually word problems जो होते हैं ना, अपनी सिर्फ common sense इस्तेमाल करनी होती है, फिर वो हो जाता है. Suppose we have a piece of clay. हाँ? जिसका पीस ऑफ क्ले हम कहते हैं, हमारे पास एक है पीस ऑफ क्ले, और उसका मास जो है 8.8 ग्राम. अच्छा, इमेजिन करो जैसे तुम्हारी मॉडलिंग क्ले होती है, ठीक है ना, जिसको वी कैन पुल अपार्ट एंड वी कैन ऐड लिटिल पीसेस एंड लंप. अ लंप मींस अ लिटिल पीस. वो कहता है कि बाय हाउ मच वुड दिस मास इंक्रीज, ये मास कितना और कितनी अमाउंट से बढ़ेगा अगर हम इसमें एक, अच्छा अब इसमें हम एक क्ले का पीस छोटा सा ऐड कर दें, इसमें मिक्स कर दें, जिसकी के वॉल्यूम जो है 3 सेंटीमीटर क्यूब्ड है. अच्छा, सवाल क्या पूछ रहा है कि जी अगर ये वॉल्यूम इस छोटे से पीस की 3 सेंटीमीटर क्यूब्ड है और मैंने अपने क्ले में मिक्स कर दी है, तो अब क्ले की जो मास है टोटल वो बढ़ जाएगा ना. Yes. तो वो कह रहे हैं कि कितना बढ़ेगा. अब अगर हमने ये जानना है कि कितना बढ़ेगा, तो हमें क्या मालूम करना चाहिए? क्या मालूम करना चाहिए? मैंने ये तो नहीं पूछा कि क्या डिवाइड करना है, किस चीज का मास मालूम करना चाहिए. ब्रिलियंट. यू हैव टू थिंक लाइक दैट. When आपकी ट्रेनिंग जो है, जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सबट्रैक्ट, I don't know what I'm going to do. I have to first know what I have to find out. So now you're thinking like mathematicians and scientists, that what you need to find is the mass of this piece meter cube. Now, how will you find the mass of a piece of clay, mass of 3 centimeter cube? क्या करोगे? डेंसिटी तो आ गई है क्ले की तुम्हारी. You know the mass of 1 centimeter cube. Can you find the mass of 3 centimeter cube of clay? Yes. By multiplying. एक क्यूब का मास 1.16 है. 2 का क्या होगा? डबल करोगे. 3 का क्या होगा? 3 टाइम्स करोगे. So what you will do is you will say okay 1 centimeter cube का इतना है और 3 के लिए 3 गुना होगा, तो वो क्या बनता है? 3.48 grams. So then what is your answer? By how much will the mass increase? 3.48 grams. Because now if you mix that with it, you will have to add 3.48 grams to it. Another, और भी आपसे एक और तरीका सवाल का ये तो है ना, by how much it would increase. They could have made it a little harder for you. I could have made it and I could have said, what will the total mass of the clay be now? मैम दोनों को ऐड कर देंगे. अच्छा जी, अब हम भी चाहेंगे कि आप भी ये जो प्रॉब्लम सेट है इसको अटेम्प्ट करें और इसको मुकम्मल भी करें. But with this lesson, we're actually bringing our lessons on density to a close with 8th grade, जो कि हमने आपके लिए as a teaching tool develop किए थे. I'm very impressed with the children for having assimilated, अभी तक वो जितना कर भी चुके हैं assimilate in such short period of time has been an amazing task.
एंड व्हाट यू नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन इज कि अच्छा जी ये जो हमने अप्रोच अडॉप्ट की टुवर्ड्स टीचिंग देम कॉन्सेप्ट्स अबाउट मास एंड वॉल्यूम एंड डेंसिटी, वो अप्रोच कितनी इफ़ेक्टिव है। हम अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें अब हम आपके साथ जो हमने बच्चों के साथ फिर फाइनल असेसमेंट इन विच यू टर्म एज द समटिव असेसमेंट वो की, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसकी फाइंडिंग्स शेयर करेंगे। सो टिल वी सी यू नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।